हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्चुअल बॉक्स। तो ये इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज द सॉफ्टवेयर वर्चुअल बॉक्स। दिस यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। यू कैन चेक दैट वीडियो एंड यू कैन सी हाउ अ वर्चुअल बॉक्स इज इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम। ये उसका आइकॉन है वर्चुअल बॉक्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज ISO फाइल, जिसको हम ISO इमेज भी बोलते हैं। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है, अगर आपको विंडोज XP इंस्टॉल करना है या विंडोज का कोई और वर्जन इंस्टॉल करना है, सो यू हैव टू फर्स्ट डाउनलोड द ISO फाइल ऑफ दैट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ दीज फाइल्स आर वेरी लार्ज इन साइज। तो मैंने विंडोज 7 की फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। यू कैन सी इट इज इन जीबीज, अराउंड 3 GB की फाइल है ये। And while downloading this ISO file, students, you have to check कि वो 32 बिट वाला है या 64 बिट वाला। आपको आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक करके you have to download the file. ओके, तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें रेडी है तो हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको Oracle VM वर्चुअल बॉक्स जो मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा है, दैट यू हैव टू ओपन। अब इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये जो न्यू बटन है, न्यू बटन को क्लिक करना है। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक पूरा मशीन बना रहे हैं। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर इज द एंटायर मशीन व्हिच यू सी इन रियल। सिमिलरली वी आर क्रिएटिंग अ कंप्यूटर, अ कंप्लीट मशीन इनसाइड दिस वर्चुअल बॉक्स, जिसको हम बोल रहे हैं वर्चुअल मशीन। अब ये वर्चुअल मशीन के अंदर हम रैम देंगे, हार्ड डिस्क डालेंगे, प्रोसेसर डालेंगे, एंड देन वी विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड इट। ओके, तो लेट अस गिव द नेम टू दिस मशीन। अब ये कंप्यूटर को हम एक नाम देंगे। सो लेट मी गिव द नेम विंडोज। ओके, अभी इसको मुझे किसी फोल्डर में सेव करना है, तो लेट मी सेव इट इनसाइड फर्स्ट। Here you have to select the ISO फाइल। तो मेरा ISO फाइल जहां पर भी है वो मैं सिलेक्ट करूंगी। ओके, अगर आपका कुछ इनकम्प्लीट इंस्टॉलेशन पहले का रह गया है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स। देन क्लिक नेक्स्ट। Now this dialog box is asking you hardware configuration, आपको कितना RAM देना है। So by default इसने 2 GB RAM सिलेक्ट करके रखा है। If you want you can increase the size of RAM, तो आप RAM की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो अगर आपको चाहिए तो। And प्रोसेसर, एक प्रोसेसर असाइन किया, if you want you can assign 2 processor. Now it is asking you the details about the hard disk. So by default 32 GB of hard disk is assigned. If you want you can increase the size. So I'm keeping it 50 GB. ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें वर्चुअली हो रही है। ये सब चीजें हम लोग ये कंप्यूटर के अंदर वर्चुअली बना रहे हैं। मतलब जो अपना ओरिजिनल कंप्यूटर है उसका डेटा यूज करके वर्चुअल बॉक्स ये सारी चीजें वर्चुअली बना रहा है और एक मशीन रेडी कर रहा है। सो दिस इज अ समरी ऑफ द मशीन। यू कैन सी द नेम, द कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लिक ऑन फिनिश। सो दिस इज माय मशीन व्हिच इज कंप्लीटली रेडी। अभी इसके अंदर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। So operating system का installation start करने के लिए you have to click on this start button. So जैसे आप यहाँ start button click करोगे, you will see that the installation of virtual box will begin. Windows की files load होना चालू हो जाएंगे. Let me increase the size of this window. Okay. अगर आपको ये विंडो का साइज छोटा लग रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन है व्यू। व्यू में जाके वर्चुअल मशीन को क्लिक करके you can increase the size. Okay. व्यू में वर्चुअल मशीन you can increase the size. यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा, so English, United States, US. Okay. If you want you can change the language, otherwise keep it default and click on this install now. यहाँ पे साइड में आपको एक विंडो दिखाई देगा स्टूडेंट, जो आपको डिटेल्स बताते जाएगा आपको मशीन के बारे में। एंड नीचे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे आपके मशीन में जैसी चीजें होती है, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव के लिए सेक्शन, बाकी सारी चीजें वो यहाँ पे दिखेगी। ये लाइसेंस एक्सेप्ट कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। कस्टम पे क्लिक करो। ओके, कस्टम पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट एन ऑप्शन
for creating partition in your hard disk. So मेरा 50 GB का जो hard disk है इसको मुझे अलग अलग drives में partition करना है. So for that you have to click on this drive option. Let me just increase the size of this one ताकि आपको ये clearly दिखाई दे. Yes, ये drive option को click करना है and then click on new. New को click करने के बाद आपको कितनी कैपेसिटी देनी है आपको फर्स्ट ड्राइव में, दैट यू हैव टू मेंशन हियर एंड क्लिक ऑन अप्लाई. ओके, तो देखो स्टूडेंट्स 25 GB का एक सेक्शन बन गया है. हाँ, एक सिस्टम रिजर्व के लिए कुछ स्पेस एलोकेट हो गया है. सो दिस इज बाय डिफॉल्ट इट विल टेक फॉर द सिस्टम रिजर्व. बाकी का जो 25 GB है उसको भी हम लोग दूसरे ड्राइव में डाल देंगे. ओके, सो फर्स्ट सेक्शन इज फॉर सिस्टम एंड अदर टू space is given to the two different drives. Okay, click on next. Now your installation will start. You can see students slowly and steadily आपका installation चालू हो जाएगा. There are few steps which will take a little time. Okay, so you need to have some patience जब तक ये सारे steps finish नहीं हो जाते. Okay, so let us see these things. तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई देगी स्टूडेंट्स which you normally have in your computer. You have floppy disk in your computer, you have details regarding your hard disk. ये सारी चीजें आपको यहाँ पे छोटे छोटे आइकॉन्स में दिख रही है. वर्चुअल मशीन से रिलेटेड अगर आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी है, you can do those settings and changes through these menu which is present here. Okay, so right now मैंने क्या किया, स्क्रीन का साइज इंक्रीज किया, कम किया. Okay, so let's wait for this installation to get completed. We are almost there. 75% is completed. स्टूडेंट्स, मैंने आपको Windows 7 का इंस्टॉलेशन दिखाया है. अगर आपको कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है विंडोज का, सो यू हैव टू फॉलो दीस सेम स्टेप्स. बट ISO फाइल आपको डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी, वो आपको सर्च करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू डाउनलोड इट. Yes, we are almost there. 100% हो गया है. Now there are some few things remaining. Let it get completed. Yes, so सारे steps finish हो गए. जैसे आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम एक नई मशीन नए कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हो तो कैसा वो मशीन रीस्टार्ट होता है, वैसे ही सेम वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये पूरा मशीन रीस्टार्ट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम विल टेक इट्स ओन टाइम. सारे वैसे ही स्टेप्स होंगे. रजिस्ट्री सेटअप हो रही है. इंस्टॉलेशन के कुछ फाइनल स्टेप्स रह गए, दैट इज गेटिंग कंप्लीटेड. यस, थोड़ा टाइम लगेगा स्टूडेंट. ओके, तो इंस्टॉलेशन हो गया है स्टूडेंट. कुछ डिटेल्स पूछ रहा है. सम डिटेल्स यू हैव टू ऐड हियर. You can give some name to your username, कुछ दे सकते हो.
पासवर्ड देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट। टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, इंडिया का टाइम, यू हैव टू सर्च एंड यू हैव टू सिलेक्ट। बाय डिफॉल्ट मैं अभी यही रखती हूँ, बट यू कैन सिलेक्ट द टाइमिंग। होम नेटवर्क, स्टूडेंट ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है इन SY। तो SY में आपको इंस्टॉलेशन आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन विच यू गेट नॉर्मली इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम। आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आपके एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा। See, it's done here. Let us see the drives. तो देखो, my C drive and my D drive. तो D drive को मुझे पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा यूज करने से पहले। So D drive अभी एक्टिव हो गया है। See? Okay, so now this is your entire operating system ready. तो मैंने अपने खुद के कंप्यूटर में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया है। Okay students, so I hope this is clear to you all, and आप अपने घर पे भी ये इंस्टॉलेशन कर लोगे। Okay then, bye.